the rise of e-religion. At that time, I manifest myself. And the second verse is to deliver the devotees, to annihilate the miscreants, and to reestablish the principles of religion. I appear millennium after millennium. ओके। तो भगवत गीता में भगवान जो अवतरित होते हैं तो वो जैसे अवतार लेते हैं कुछ से अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो कारण है उसका भगवत गीता में बताया है। तो चैप्टर नंबर 4 उसमें श्लोक नंबर 7 और 8 जो है उसमें बताया है। तो उसका जो श्लोक नंबर 7 है वो प्रभु जी ने उच्चारण किया था। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थार प्रदार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि इस धरातल पर जब भी धर्म का मतलब विनाश होना जब शुरू हो जाएगा, जैसे वो धर्म नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, तब भगवान अवतार लेते हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो हम कहते हैं उनको भी वो भेजते हैं। और दूसरे श्लोक नंबर 8 में ये बताया कि धर्म को जैसे वो नीचे गिरना शुरू होता है फिर से भगवान आके अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज के वो जो भी प्रिंसिपल्स जो भी स्टैंडर्ड्स जो भी नीचे गिर जाते हैं फिर से उसे ऊपर उठाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। यस प्रभु जी। Hydration time, like the football. Okay, so we're gonna go in here since this is, we know the 10 avatars manifestation, and we're gonna talk about all of them in a simplified form. So I don't want to like push this, more than it should be. So I want to just mention that all these manifestations of the Lord in this world, they don't come because the Lord decide, well, let me come and see what's happening. It comes because the Lord has a connection with his devotees. Okay? And each incarnation, you see the Lord comes to manifest that paritranaya sadhana. You see, to protect the devotees in different ways, in knowledge, protect physically the devotee like Nrsingadev, like the knowledge like Matsya. He preserved the Vedas. So he could come to a next millennium and the Vedas were preserved. See? So the Lord comes and has a relationship with us. You see? When we see the Lord appearing, he has to do something with us, even here in Kali Yuga, at this particular moment in the Vedic calendar. ओके। तो हम सब जानते हैं भगवान के जो 10 अवतार है उनके बारे में। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सभी अवतारों की हम चर्चा करें। इसमें जो भगवान का अवतार जो हम जानते हैं कि भगवान जो अवतार लेते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि भगवान ने सोच लिया कि चलो मुझे अब अवतार लेना है और मैं अवतार ले लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। उसमें उसके पीछे का ये कारण होता है, मुख्य कारण, कि भगवान के जो भक्त है उनके कारण से वो यहाँ पर अवतार लेते हैं। उन जैसे भक्तों की रक्षा करनी है, उन्हें प्रोटेक्शन देनी है। जैसे हम जानते हैं कि भक्त प्रहलाद जी को कैसे भगवान ने प्रोटेक्शन दी थी। तो उनका भगवान का जो है अपने भक्तों के साथ जो संबंध होता है, रिलेशन जो होता है, उसे बना के रखने के लिए वो यहाँ पे अवतार लेते हैं। यस प्रभु जी। So we start with Matsya avatar. Okay? They call the fish. But I'm not gonna do this with every incarnation, but only with Matsya. They call the fish. I don't think it's very, particularly for the Bengalis. Okay, they like the fish part. The Matsyavatara was aquatic manifestation of the Lord. You see, full of potency. So he came and he has a beautiful pastime because this king, Satyavrata, later Vaishvata Manu, he come to save the Vedas and protect,
King Satyavrata during the universal flood. Okay, there's a pastime in there. I'm gonna mention a little bit. ओके, सो यहाँ पे हम जो भी अवतार है उनकी चर्चा करेंगे। उसमें से सबसे पहला जो अवतार है मत्स्य अवतार, जिसे हम मछली या फिश से जानते हैं। तो ये एक एक्वेटिक जो समंदर में पानी में रहने वाले जो जीव रहते हैं उसमें से एक ये पहला भगवान ने जो अवतार लिया था। और उसमें भगवान जो आए थे उनका एक बहुत सुंदर लीला है। तो उसमें जो सत्यव्रत जो होते हैं जो मनु के बाद आए थे, तो उसमें ऐसा था कि जो पूरे यूनिवर्सल जैसे पूरा एक बड़े सा एक फ्लड जो आने वाला था उससे बचाने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। यस प्रभु जी। See, King Satyavatra, he found a small fish in the some kind of a bucket. He sees this fish in there, and the fish tells the king, "I'm growing, and this bucket is too small for me. Please find me something bigger." So then the king got him like a bigger place. And again, the fish was growing. And he said, "This is not enough for me." So he put him in a lake. It was not good enough. So he kept growing like this until he went to the ocean and revealing, himself to King Satyavrata. And, then he's manifested his pastime. So the lesson here, the Lord's protect his devotees and preserve transcendental knowledge. This is in the Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, Canto 8, verse 24. If you pundits out there, if you want to, get a little bit of that, you can see that part in the Bhagavatam. 8, verse 24. ओके। Chapter 24, sorry. Canto, wait, Canto 8, verse, हम्म। chapter 24. Yes. ओके। यस। ओके, तो जो राजा सत्यव्रत थे, तो भगवान जब प्रकट हुए मत्स्य अवतार में, तो बहुत एक छोटी सी एक सूक्ष्म सूक्ष्म तो नहीं कह सकते, सॉरी, बहुत छोटी सी एक मछली के रूप में थे। तो उन्होंने राजा सत्यव्रत से कहा कि मुझे एक बकेट में डाल दो। तो फिर वो बकेट, फिर उसमें क्या हुआ कि जो मछली जो थी वो धीरे धीरे उसकी साइज बड़ी होने लगी। तो उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि मुझे एक बकेट दूसरे बड़े में जिसमें डालो, जिसमें ये मतलब मेरे लिए साइज छोटी है। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक बड़े से और बकेट बड़ा सा कुछ सामान लाया, उसके अंदर और डाला। फिर वो दूसरे दिन फिर से देखा तो उनका जो शेप है फिश का वो और बड़ा हो गया, वो दिन ब दिन और बड़ी होती जा रही थी। तो सत्यव्रत ने क्या किया कि ऐसे लेके जो लेक होता है उसके अंदर उनको डाल दिया कि उनकी साइज और बड़ी होती जा रही है। और ऐसे ही उनकी साइज और बड़ी होती गई। तो ये इसकी जो चर्चा है श्रीमद् भागवतम के चैप्टर नंबर 8 और स्कंद 8 है, और चैप्टर 24 में इसकी चर्चा की गई है। यस प्रभु जी। Okay. So the second in the beautiful lineup is the kurma. I love kurma. You see, I love the name kurma because here they have some kind of a food it's called kurma, very delicious. The tortoise, okay, that is the beautiful manifestation of the Lord, which appears to be a tortoise. The Lord is beyond that. But anyway, this he came here to support the Mandara mountain during the churning of the ocean of milk. Because the demigods and the devas, actually, if you go to Thailand, in the Bangkok airport, right there's a display. This is a big thing in Thailand, the demigods one side, the demons in the other, they churning the ocean of milk. There is a lot of temples doing the churning of the milk, in the carvings and everything in Thailand, Cambodia also. So what happened is they want to churn the Mandara mountain to bring the churning, produce certain things that are essential for the protection, to maintain the universe. All kinds of things are coming out from the churning of the ocean. But
the Mandara mountain, you wouldn't stand. See, it needs a pivot. It needs something to hold the mountain so it can be turned the ocean. It's like a blender or something. So the Lord appeared. That's a that's a kurma. You went right under the mountain, and he was telling that, oh, I'm feeling a little scratch in my back, so please, you go and churn, and then you get the itch out of my back. You Oh, see? uh, okay. So he doubt the Lord, the mountain would sink. And the idea here is behind every great achievement is the unseen support of the Lord. This is Bhagavatam, Canto 8, chapter 5:12. Okay, even in our lives, we attain certain things. We have to see the unseen participation of the Lord. As devotees, we must see that. Thank you, Madam. wow. Yeah. My Okay. first wall. Hare Krishna. Go ahead, Madam. Got it? Yes. Okay. यस गॉट इट। ओके, सो हम दूसरा जो अवतार है उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है कुर्म अवतार। जो कुर्म का अवतार है, प्रभु जी कह रहे हैं मुझे वो बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है ये अवतार। और कुर्म मतलब होता है कछुआ, टॉर्टॉइस हम जिसे कहते हैं। तो इसमें बहुत ही सुंदर लीला है। और उसमें हम भगवान आए थे, किस तरीके से उन्होंने अवतार लिया था, एक मतलब सपोर्ट देने के लिए, मदद के रूप में। तो उसमें ये लीला थी, जो मंदारा नाम का जो पर्वत था, उसमें जो भी देवी और देवता जो मतलब उनके बीच में जो थोड़ा सा कहते हैं ना चर्निंग करना का मतलब, चर्निंग को जैसे हिंदी में बिलौना कहते हैं, उसे ऐसे ऐसे करने के लिए हेल्प के लिए चाहिए थी। और वो किस लिए चाहिए थी कि जो पूरा जो यूनिवर्स है उसको वहां से हेल्प करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, और उसमें से कोई 7 चीजें प्रकट होने वाली थी इसके लिए। तो इसलिए वो माउंटेन जो था, पर्वत जो था, उसको जैसे अगर माउंटेन रहेगा तो उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, उसको हम ऐसे, यस समुद्र मंथन, यस एग्जैक्टली राइट, समुद्र मंथन। तो उसके नीचे Okay. सपोर्ट चाहिए था। तो समुद्र मंथन में फिर भगवान ने जो कहा कि मेरे पीठ पे, भगवान ने पहले तो कुर्मा अवतार लिया, टॉर्टोइस के रूप में आए, और उन्होंने मतलब ये इच्छा व्यक्त की कि मेरे पीठ पर जो है थोड़ी सी खुजली, काइंड ऑफ ईचिंग थोड़ा हो रहा है, तो उसमें थोड़ा आप मुझे हेल्प कर लीजिए। तो जो मंदारा पर्वत के नीचे भगवान गए, और एक उनको मदद के रूप में थोड़ा सा उनकी ये मदद हो रही थी भगवान की, कि उनके पीठ पर जो खुजली हो रही थी उससे वो मतलब खुजली उन्हें खुजाने के लिए ऐसा सपोर्ट मिल रहा था मंदारा पर्वत से। और दूसरा जो है कि वहाँ पे देवी देवता जो है समुद्र मंथन में जो मंथन करने के लिए शुरू हो गए थे, चढ़ने के लिए। तो हम ये पूरी जो चर्चा है वो हमें मिलती है श्रीमद् भागवतम के 8.10.5 में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान का जो है, उनकी जो कृपा है, उनकी जो मदद हमें जो मिल रही है, वो एक अनसीन में मिल रही है। What is the position in the Srimad Bhagavatam? What is telling? What position you looking for? Okay, I just described the position. It's one the first one. avatars of the Lord. Yeah. Okay. I Okay. just I leave like Sorry. that now. At the end, we can have questions. Okay. Who Okay. wrote Yes. that? Don't know. I forgot the name. Shavik Prabhu. Okay. ओके, सो लिटिल बिट आई हैव रिमेनिंग। सो जो दूसरा जो है वो प्रभु जी ने बताया कि हम ये जो पूरी लीला है इसके बारे में जो कार्विंग की गई है, जब हम थाईलैंड में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि चर्निंग हो रही है। एक साइड में देवताज है, एक साइड में डेमिगॉड जो राक्षस है वो है, और जो बीच में एक मंदारा पर्वत है, और ये पूरी लीला चल रही है। तो इस तरीके से हम वहां पे जाते हैं तो कार्विंग एक पूरा सुंदर सा बनाया गया, तो हम वहां पे थाईलैंड में देख सकते हैं। यस प्रभु जी। So next we come to the dream team. Just like the World Cup, they have 11 players. Here we have 10. Have to find the goalkeeper. It must be the devotees. So anyway, the Varaha, divine boar.
This is no ordinary board. It comes full with jewelry, with gold necklace, and it's looking very beautiful. Okay. The purpose of his appearance was to lift Mother Earth from the Garbhodaka ocean after the demon Hiranya submerged her. It's kind of kidnap Mother Earth and try to keep her, under his control, which is all the demons that like to do that. So Varaha, he killed that demon in a tremendous fight. Now you have to understand the Lord, he loves to fight and he fights with the demons. Sometimes the demons are devotees that come here. They are demons. The Lord's fighting them, kill them, take them back. It's a little wrestling match. Uh, so the lesson here is that there is no place beyond the Lord's reach. This is in the Bhagavatam, Canto 3, chapter 13, 19. Now, sometimes we try to hide our own, it's like concocted ideas in our heart, but that heart is not far from the Lord's reach. The Lord goes there and shines some light and puts straight out the head, so you cannot hide from the Lord. He can go find more the earth in the Garbhodan ocean. He can find what is not right in our heart and take it out with the proper process of devotional service. See, that's Varaha. Okay? Wow. So, Prabhuji, I have one question. So, in Yes. there, there was one ocean where the Hiranyaksha, he kept the Mother Earth there. So, the name of Gar- that ocean is a Garbhodak. Garbhodaksha. Yes. Garbhodak. Okay, yes, got it. यस ओके सो हमारा जो तीसरा अवतार है यहाँ पे हमने जो चर्चा की है वो है वराह अवतार। तो जो वराह अवतार में भगवान जो प्रकट हुए थे तो वो बहुत ही सुंदर, उन्होंने सब ज्वेलरी पहन के रखी थी, नेकलेस, हम जानते हैं बहुत सुंदर अवतार था भगवान का। तो उसके पीछे का जो पर्पस, जो कारण था कि जो जो पृथ्वी माता है, जो पृथ्वी देवी है, उन्होंने उनको मतलब जो पूरा समुद्र है, गर्भोक्त करके जो पूरा समुद्र है उसके अंदर छुपा दिया था। किसने छुपाया था? हिरण्याक्ष ने। जो राक्षस था उन्होंने छुपा लिया था, क्योंकि हिरण्याक्ष जो है वो राक्षस है और उनकी प्रवृत्ति होती है कि हम सारी चीजों को कंट्रोल करके रखे। तो उन्होंने जो पृथ्वी देवी है उनको भी अंदर छुपा दिया था। तो यहाँ पर भगवान ने जाके उनको निकाला, उनको ढूंढा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर भगवान की जो है बहुत सुंदर एक युद्ध हुआ भगवान के बीच में और जो राक्षस हिरण्याक्ष थे उनके बीच में। और यहाँ पे हम जानते हैं कि भगवान को जो है लड़ाई करने का मतलब वो ऐसे इच्छा जो होती है वो बहुत अच्छा लगता है उनको फाइट करने का। और जो फाइट जो करते हैं, जो अवतार जो राक्षस का लेते हैं, वो भी भगवान के भक्त ही होते हैं, लेकिन वो सिर्फ भगवान को फाइट करने का जो आनंद देने के लिए वो मतलब राक्षस के रूप में अवतार लेते हैं। तो ये कुछ रीजंस है। और यहाँ पे एक और रीजन ये है कि भगवान, जैसे हम देख रहे हैं इस लीला में, कि वो गर्भोक करके जो बड़ा समुद्र है उसके अंदर छुपे हुए इस पृथ्वी को भी, पृथ्वी देवी को भी निकाल दिया। उसी तरीके से भगवान हम देख सकते हैं वो हर जगह पहुंच सकते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं भगवान जहां नहीं पहुंच सकते। उसी तरह हमारे हृदय में जो भी चीजें, अगर कोई खराब चीजें या फिर जो भी चीजें छुपी हुई है जो हमने दबा के रखी है, तो भगवान भी वहां पर पहुंचेंगे और फिर से उन सारी चीजों को निकालेंगे और उन चीजों को मतलब वहां पे एनलाइट करेंगे, बताएंगे हमें। तो और वहां से उस चीज को भी हटा के हमारे सामने मतलब लाएंगे कि इन चीजों को भी वहां से ठीक करना है कुछ। तो भगवान हमारे इस तरीके से भी मदद करते हैं। यस प्रभु जी। So now we come to the midfield. Now the defense was there. No? Uh, 1, 2, 3. That's the defense line. Then they have midfield. Start with Nrsingadev. Yay! I love Nrsingadev. Who loves Nrsingadev? Yeah, I love या Nrsingadev. Many times I think the world wouldn't be complete without Nrsingadev. The whole universe.
wouldn't be complete. There was something was missing. Anyway, so this is one of the most beloved incarnations of the Lord because specifically he direct to our activities, which is preaching. And every time we preach, we raise the anger of the demons and we raise the peace of the devotees. When you raise the anger in the demons, they sometimes become physical and do so many things. So Nursing is there to protect the devotee. ओके, तो हमारा जो चौथा अवतार है वो है भगवान नरसिंह देव का। तो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि नरसिंह भगवान जो है, ऐसा माना जाता है कि ये जो दुनिया है, अगर नरसिंह भगवान नहीं होते उनके बिना, मतलब इस अवतार के बिना, तो वो मतलब मिसिंग है, वैसे पार्ट ऐसे अधूरा सा है। तो भगवान नरसिंह के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो भी एक्टिविटीज जो होती है, हमारे जो क्रिया होती है, जैसे हम प्रचार की जो हमारी एक्टिविटी रहती है, तो अगर हम जो प्रचार करने जाते हैं वहां पे हम देखते हैं कि कुछ मतलब कुछ ऐसे विरोध करने के लिए कोई ना कोई हमें वहां पे मिल जाता है। और कोई अच्छे भी होते हैं, तो कभी कभी जो गुस्से में होते हैं कोई हम पे फिजिकल अटैक भी कर देते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, भगवान नरसिंह देव हमारी रक्षा करते हैं। यस प्रभु जी। We have a little bit of example. During the old Sankirtan days, the devotees are doing Harinam Sankirtan in the streets. This probably could be New York or Chicago, I can't remember the city. And in the other side of the street, was not like a big avenue, just like a normal road. There was this demons, demons, and they were throwing bad words and everything. So one of them decided to become more involved with the attacking the devotees, and he took a bottle of something. He was coming towards the devotees, and the devotees are chanting, Namaste Narasingaya Pralalada Ladala. He was crossing the road and he was so angry. He was coming. Yeah, I'm gonna get this devotees. He forgot to see this car is coming and hit him. Boom, right there and then. I don't know if he left his body or not, but the attack stopped, you see, and we continue to do our chanting in peace. So this is the power of Nashingadev, and it is what he does. He protects the devotees. And what is the devotee that he protects the most? What is the name of that devotee? Who can tell me? प्रहलाद महाराज। Prahlad. Prahlad. Yeah. Very good. I love Prahlad Maharaj. And we should always be very soft-hearted towards Prahlad. We already are. Because Prahlad, he made the Lord appear. Just like Advaita Acharya, by praying to the Shalagram, he made the Lord Chaitanya manifest. Of course, Lord Chaitanya didn't come from the pillar, but Prahlad Maharaj, he such a sweet devotee, and the Lord could not stand to see, Prahlad Maharaj being abused. There was like a child abuse, ticket for this one. And Lord Nrsimhadev was ready to appear anywhere, anytime. It's just Prahlada say, he would come. He came from a pillar, which I think is the most amazing thing that, we can hear. Now, the karmis, the demons, they hear this, mythology, right? Okay, you take the mythology. I take the real thing, that's Nrsimhadev, man. Hare Krishna. Right. ओके ओके, सो यहाँ पे हम एक उदाहरण लेंगे। तो उदाहरण में यह था कि भगवान नरसिंह देव ने किस तरीके से भक्तों की रक्षा की। तो जो पुराने जो दिन थे, जो अर्ली डेज जो थे, जहाँ पे संकीर्तन भक्त करते थे, तो भक्त जब संकीर्तन कर रहे थे तो वहां पे ऐसा हुआ कि एक जो स्ट्रीट है वहां पे तो शांति से कीर्तन हो रहा है, और दूसरी जो स्ट्रीट है, जो गली है, वहां पे संकीर्तन चल रहा है। और वहां पे कुछ राक्षस प्रवृत्ति के कुछ लोग आए और उन्होंने क्या किया कि वो
कोशिश कर रहे थे कि हम इन भक्तों को परेशान करेंगे, इनको अटैक करेंगे, तो वो क्रोध में आके उन्होंने कांच की बोतल लेके उन भक्त को मारने के लिए उनके तरफ दौड़े। तो वो दूसरी तरफ से दौड़ के आ रहे थे, तो भक्त ने देखा कि ये हम पे अटैक करने आ रहे हैं, तो वो डर में आके भय से वो भगवान को पुकारने लगे। तो पुकारने के लिए उन्होंने भगवान नरसिंह भगवान की जो आरती है उसे गाना शुरू कर दिया, नमस्ते नरसिम्हाय करके। फिर जैसे आरती गाने लगे, उसमें ऐसा हुआ कि वो जो क्रॉस करके जो राक्षस प्रवृत्ति वाले जो पर्सन जो आ रहे थे बोतल फेंकने के लिए उन भक्त के ऊपर, अचानक से एक कार आई और उनको अटैक किया उनके ऊपर। और वो वहां पे ही मतलब, अब ये अच्छे से नहीं पता कि उनकी वहां पे मृत्यु हो गई या नहीं हुई, लेकिन एक बार के लिए इतना हुआ कि वो जो अटैक बोतल से मारने के लिए भक्त पे जो आ रहे थे वो अटैक रुक गया। तो भगवान नरसिंह देव ने कुछ इस तरीके से वहां पे रक्षा की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान नरसिंह में कितना पावर है कि उनकी आरती गाने से ही अटैक उनके ऊपर, भक्त के ऊपर जो हो रहा था, उससे वो भक्त बच गए वहां पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रहलाद महाराज जो है वो भगवान के भगवान को जो अवतरित हुए, नरसिंह भगवान जो अवतरित हुए, प्रहलाद महाराज उनके कारण है। और हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रहलाद महाराज ने अगर चाहते भगवान, तो वो किसी भी अवतार में आने के लिए मतलब वो तैयार थे, क्योंकि उनके जो भक्त थे प्रहलाद महाराज, उनको बहुत ज्यादा मतलब कष्ट दिया गया था, तो भगवान से बिल्कुल सहनीय नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने, हम देखते हैं, हम जानते हैं कि भगवान ने किस तरीके से पीलर में से, एक स्तंभ में से भगवान अवतरित हो गए। उसी तरीके से हम दूसरा एक मतलब उदाहरण लेते हैं, जैसे अ, अद्वैत आचार्य जो थे, उन्होंने कैसे शालिग्राम की जैसे पूजा की, उनकी उनसे प्रार्थना की, और वहां से लॉर्ड चैतन्य जो है, भगवान चैतन्य जो है, वहां से उन्होंने उनकी पुकार सुन के फिर उन्होंने इस धरातल पे वो प्रकट हुए। वो स्तंभ में से तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन वो इस धरातल पर प्रकट हुए अद्वैत आचार्य जी की प्रार्थनाओं से। यस प्रभु जी। So there is few things because I want to give a little bit more understanding with Nashingadev. Because there's so many angles that you can study and learn so many things. Well, the first thing is the Lord intelligence is unlimited. This word unlimited. But here you see the application of this unlimited intelligence. Because the demon is thinking, I'm so smart. And I get this boom from Lord Brahma, right? And he said, well, I don't want to be killed day and night. You see, he tried to cover every possible way that he could be killed. So in a sense, since he cannot get immortality, this is what all the demons want. You see, I'll be immortal by never having the possibility of dying, which is like a way through the back door in there. You see? So the Lord is extremely intelligent, and he created a situation that he fulfilled all those predictions that he tried to put, specifications that he tried to put to Lord Brahma, and he still get to kill him because he was actually creating a disturbance in the system. You know, the demigod, he was very powerful. The demigods were afraid of him. Can you see Indra and Brahma and all this? They're hiding from him. You see, he was such an incredible power. And Prahlad was challenging that power. You see, he was a kid. He was not even aware he was challenging that power. He was just a devotee, expressing his devotion. And he sees the Lord, you see, the Lord protect his devotee. Prahlad was fearless because he knew one truth. The Supreme Lord is everywhere. Now we have to understand that too. Okay? Sometimes theoretically we understand, but we have to understand by actually personal experience, personal life. Hi, Krishna. To realize like No, the personal experience. Okay, we have to experience that the Lord is everywhere. Okay, so this is a lesson for every preacher. I'm gonna go for the next.
ओके ओके, सो हम यहाँ पे एक और इसी नरसिंह भगवान के अवतार पर ही एक और हम कुछ चीज सीखेंगे। तो उसमें यह है कि भगवान जब अवतार लेते हैं, और भगवान को हम जानते हैं कि भगवान के पास जो इंटेलिजेंस जो है, जो बुद्धि है, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। और हमारे पास जो है वो क्या है, लिमिटेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राक्षस, जो हिरण्यकश्यप जो थे, वो क्या क्या सोच रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। तो उन्होंने वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हुए उन्होंने क्या किया, ब्रह्मदेव जो थे उन बहुत सारी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया, और उनसे वो आशीर्वाद के रूप में चाह रहे थे, और बहुत सारा ये मांगा वो मांगा कि मैं कभी मेरी मृत्यु ना हो, ये ना हो, वो ना हो, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारा उन्होंने मतलब आशीर्वाद उनसे मांगा। फिर उन्होंने वो बहुत हिरण्यकश्यप जो बहुत ज्यादा उनके पास जब पावर आ गया, तो उन्होंने क्या किया, जो देवता जो थे उनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो जो हम जानते हैं, जो स्वर्ग के जो राजा राजा है, इंद्रदेव, अग्निदेव, जो भी अलग अलग जो भी देवता है, उन सबको उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। तो वो क्या कर रहे थे, उनसे छुप रहे थे, हिरण्यकश्यप से छुप रहे थे, और यहाँ वहां भाग रहे थे। अब यहाँ पर हम जानते हैं, ये चीज को देख पा रहे हैं कि हिरण्यकश्यप कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। लेकिन यहाँ पे उनका ही जो पुत्र है हिरण्यकश्यप का, प्रहलाद महाराज, जो छोटे से है, वो इसी पावर को चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान जो है वो हर जगह पर है, भगवान कण कण में है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे बिल्कुल कहते हैं ना, फेयरलेस होकर इस चीज को यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं। तो यहीं पे ये चीज जो है हम सबको भी सीखनी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को पता तो है, और उनको ये चीज उन्होंने अनुभव भी की कि भगवान हर जगह पर है। लेकिन हमें भी ये चीज कहीं ना कहीं पता है कि यस, भगवान कण कण में है, हर जगह पर है, लेकिन हमने इस चीज को अभी तक अनुभव नहीं किया है। हमें जरूरत है इस चीज का अनुभव करने की, इस चीज को महसूस करना, अपने जीवन में उतारना कि यस, भगवान कण कण में है, हर जगह पर है। तो इस चीज की जरूरत है, खास करके जो प्रचार करते हैं, जो प्रचारक है उनको। यस प्रभु जी। So, this is a lesson for every preacher. Okay, we are devotees, preacher of the sanctioned movement of Lord Chaitanya. That when we sincerely preach Krishna consciousness, we may face opposition, criticism, and even persecution. Okay, Nashingadev teaches that the Lord personally protects those who risk everything to glorify Him. And as Krishna's promises, right? Declare it boldly, my devotee never perishes. You see, that's Bhagavad Gita 9:31. I love this verse. It gives me the confidence, that the Lord is there behind the devotee. You see, we just have to be sincere and honest. We may be a little falling, we may have our shortcomings, but you have to be sincere and honest with the Lord. And the Lord will have our back. Sometimes we have problems. It's not just physical problems. No Hiranyakashipu is going to come and get a sword and slash us. No. But we have other Hiranyakashipus inside our minds that will come and try to take away our peace and our balance, in devotional service. So we must see the Lord is everywhere. He's in your heart. The Lord will protect you, but He will not gonna protect you according to what you think He should protect. Oh, I'm poor, so the Lord has to give like $1 million. No, it's not like that. The Lord will help you to have intelligence to, find something to do that is profitable, and then you'll be able to take care of your personal life, your progressive life. You see, that's like this. It's like man propose, God dispose. So we wanted the protection of the Lord. We have to be working for that protection. Meaning that we just sit around, waiting for the protection to be there. We have to go out there and, create, our work and trust the Lord when comes. The Lord will be there to protect us, and He does. Okay, He does, and we all know He does because we all have a little bit of the experience on that point. ओके ओके, सो यहाँ पर हम एक और सीखना चाहेंगे। तो वो ये है कि हम जो प्रचारक है यहाँ पर,
भगवान चैतन्य के इस संकीर्तन का जो एक आंदोलन है, इसको हम जैसे आगे लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम जब जब प्रचार करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए जब जब आगे बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि हम हमारे ऊपर कोई ना कुछ अटैक या फिर हम क्रिटिसिज्म, कुछ ना कुछ हम इस चीज को हम देखेंगे, फेस करेंगे। और कोई ना कोई हिरण्यकश्यप की तरह हमें भी परेशान करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भगवान श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 9.31 में यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो सच्चा भक्त है, जो मेरी भक्ति कर रहा है, उसके ऊपर अगर कोई भी परेशानी आएगी तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसका कभी भी कहते हैं ना, उसका मतलब नाश नहीं होगा, काइंड ऑफ, थोड़ा ऐसा है इसका मीनिंग। तो यहाँ पे भगवान ने इस तरह के से, मतलब भगवान बता रहे हैं वो कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा, ऐसे ही। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि भक्तों के जीवन में जो भी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे तो हमने देखा था कि कैसे तलवार से, मतलब प्रहलाद महाराज को परेशान किया जा रहा है और अलग अलग उनको प्रताड़ना दिए जा रही है। तो हमारे जीवन में जरूरी नहीं कि कुछ ऐसा ही होगा, जरूरी सेम उसी तरह की तलवार आएगी, हिरण्यकश्यप आएंगे, ऐसा नहीं। हमारे जीवन में कुछ अलग परेशानियां आ सकती है, जैसे कि हमारे मन में, हमारे हृदय में, अंदर में हमारे हिरण्यकश्यप कोई ना कोई बैठा हुआ है, जो हमें बार बार परेशान करता है, जो हमारी भक्ति जीवन को, उसमें जो बैलेंस बन रहा है उसे डिस्टर्ब करने के लिए, उसे इम्बैलेंस करने के लिए, उसे परेशान कुछ ना कुछ करता रहता है। तो यहाँ पे भगवान से हम जब प्रार्थना करेंगे, तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। और प्रोटेक्ट करना, हम हमें मतलब भगवान जो प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि मुझे इस चीज की जरूरत है, हमारी इच्छा के हिसाब से हमें भगवान प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं। भगवान अपने हिसाब से प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे प्रभु जी ने उदाहरण बताया कि जैसे कोई है, बहुत गरीब है, वो चाहता है कि भगवान मेरी रक्षा के रूप में आप मुझे ये करिए कि मुझे बहुत सारा धन लक्ष्मी दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसे अच्छे तरीके से भगवान उसकी रक्षा करेंगे। यस प्रभु जी। So this is an interesting thing. The Lord in the Bhagavad Gita, he says, I am the supreme personality of Godhead. Basically, that's the essence. But Arjuna said, well, can you show that universal form, that godly form of yours? And Krishna said, I'm God, and he showed I'm God. You see, here the Lord saying, I'm protect the devotee. And here is showing how he's protecting the devotee. You see, coming out in a situation like that, protecting a small child that cannot even fight for himself, it's a child against his powerful father. He protects all the way, not just, in the time of the pillar, before he throw out in the cliff with the snakes, pit of snakes, the Lord protect him all the way. So this is the relationship between the Lord and his devotees. The Lord says, and he proves what he says. Prahlad Maharaj, he has a beautiful prayer. He said, I'm not afraid of material existence. My only concern is for the fools and rascals who had forgotten you. That's Srimad Bhagavatam, 7, Canto 9, chapter 43, verse. This is the mood of a preacher, not concerned for his own safety, concerned for the conditioned souls. Nrsimhadev protects such devotees. So this is the seventh canto of the Bhagavatam. That is the Nrsimhadev, pastimes in there. यस, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जो बता रहे हैं कि मैं सुप्रीम लॉर्ड हूँ, मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हूँ, मैं भगवान हूँ। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि यस, हम मानते हैं आप भगवान हो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जो यूनिवर्सल, उसमें जो रूप था, कोई हिंदी बताएगा इसका मुझे, जो चैप्टर नंबर 11 में जो है वो यूनिवर्सल जो पूरा रूप था, विराट विराट रूप, यस, विराट स्वरूप, यस। तो विराट स्वरूप अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिखाया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान ऐसे मतलब बोल रहे हैं कि एक जगह पर उनकी रक्षा कर रहे हैं, वो बोल भी रहे कि हाँ, मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हूँ। और यहाँ पे वो अर्जुन को दिखा भी रहे हैं उनका विराट स्वरूप, अर्जुन को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक छोटा सा बच्चा जो है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है अपने जो शक्तिशाली अपने पिता के सामने, जो राक्षस है। तो भगवान किस तरीके से आके उन भक्त की, जो छोटा सा जो भक्त है, उसकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भगवान और भक्त के बीच में जो रिलेशन, जो संबंध है, उसको हम यहाँ पे समझ पाएंगे। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान कहते हैं,
वो जो मतलब प्रॉमिस जो करते हैं वो उसको पूरा करके भी दिखाते हैं। यहाँ पे ये सारे हम जो उदाहरण है ये एक प्रूफ के रूप में है हमारे पास यहाँ पे। तो इन सारी लीलाओं की जो चर्चा है वो श्रीमद् भागवतम के 7.9.43 में यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज जो है भगवान नरसिंह भगवान से जो कहते हैं वो ये है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जो आपको जो भूल गए हैं, हे भगवान जो आपको भूल गए हैं, मैं मतलब वो आपको फिर से याद करे, कुछ ऐसा करूं। तो उनका हम जो यहाँ पे जान पा रहे हैं कि उनका जो मूड है, उनका जो सारा जो कहने के पीछे का जो कहते हैं ना, उद्देश्य जो है वो है प्रीच करना, भगवान के बारे में सबको बताना, ना कि वो खुद के लिए कुछ मांग रहे। तो यही जो मूड है हमें भी, हम भक्त है, हमें भी आगे लेके चल रहा है कि हमें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। जो भगवान को जो जीव भूल गए हैं उनको फिर से याद दिलाना है कि उनका और भगवान का क्या संबंध है। यस प्रभु जी। Okay, hold on. यस प्रभु जी। Opa. Yes, just a minute. Okay. Okay, now we live in the Nashingadev Loka. We're going to Vamanadev. Yay! Vamanadev. Yes. Okay. Yes, 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 Vaman Dev. Okay. Yeah. I'll In see. starting you, I heard the Varadhar. I thought Varadhar it's completed. No, it's Vaman. Yeah, Yes, correct. Nashingadev is complete for now. Yeah. Okay. Vamanadev. Okay. Now, Vamanadev is interesting. Uh, we can get some angle on the appearance of Vamanadev. He came to actually steal the heart of Maharaj, Bali Maharaj. And he did in such amazing thing by displaying immense power, you see, and very intelligent power, you know, to conquer his heart. Okay, so Bali Maharaj, he was very, how do you call, magnanimous, and he was giving charity in his jagya. So Vaman approached a small boy, okay, with a little umbrella, very cute looking, almost like a child, you see. And he said Maharaj said, "Oh, you're beautiful Brahmana boy. I'll give you charity. What do you want? You can ask anything. Even you can ask a whole planet. I'll give it to you." So the Vamanadev said, "I want 3 steps of land." It's amazing, you know. And the king was taken aback. What? I can give you a whole planet, a whole part of the universe, and all you want is the uh, 3 steps of land. I can see, he's still, I can see you're not very intelligent. You can get some more. Yeah, yeah. Try to be a little greedy. Try to be a little greedy. You see? So anyway, he gives, even against advice of his guru, he gives no the water that sanctify the process, and he gave 3 steps to Lord Vamana. And the first step, he covered the whole earth. The second step, he covered the whole universe, even he's taking up the coverings of the universe by which Ganga came in. Then he turns to Bali Maharaj and said, "You cheat me. You said you give me 3 steps of land. 2 steps, I took everything. Where am I going to put my third step?" And I think this is amazing answer by Bali Maharaj. Or the third step you can put in my head. So he surrendered. I give everything I have plus myself. You see, that's a wonderful devotee. So we learn something here, that humility conceals unlimited power. You see, not because he's a humble boy doesn't mean he doesn't have a power that can stretch all over the universe and take the heart of Bali Maharaj away. You see, so humility conceals unlimited power. So this is in the Bhagavatam, Canto 8, chapter 18, 23.
What was that number of? Sorry, Who is that? Bhagavatam? Bhagavatam. हाँ. Hold on. Canto 8, chapter 18, 23. Yes, yes, yes. Done. ओके. सो हमारा जो नेक्स्ट अवतार है, जो वो है वामन देव का. तो वामन देव का जो अवतार है उसका हम कुछ अलग तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उनका प्राकृतिक कैसे और क्यों हुआ. तो वो है कि वामन देव जो है वो इसलिए प्रकट हुए कि जो वो उनके पीछे का ये उद्देश्य था कि वो बलि महाराज का जो हृदय था उसको चुराने के लिए. हम यहाँ पे देखते हैं जो वामन देव जो है भगवान जो है वो बहुत ही बुद्धिमान तरीके से सारी चीजें कर रहे थे. तो उसमें जो बलि महाराज जो है वो एक यज्ञ में बैठे थे. तो उस यज्ञ में ऐसे था कि वो कुछ ना कुछ दान करेंगे, चैरिटी करेंगे. तो भगवान जो है वामन रूप में छोटे से एक बौने से रूप में बहुत ही सुंदर रूप लेके, एक ब्राह्मण का सुंदर रूप लेके वहां पर आए. और उन्होंने कुछ दान में मांगा. तो वहां पे अभी मांगना बाकी था, अभी वो सिर्फ आके खड़े थे. तो बलि महाराज ने वहां पे देखा कि ये बहुत सुंदर कोई बालक आया है ब्राह्मण के रूप में, तो मुझे इसे कुछ चैरिटी, कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए. तो बलि महाराज ने कहा कि आप बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लग रहे हो, आप सुंदर बालक, ब्राह्मण बालक, आप क्या चाहते हो? मैं आपको जो कहोगे मैं आपको आज दान में दूंगा. आप अगर कहोगे कि पूरा एक प्लेनेट, अगर पूरा यह ग्रह आपको दे रहा है तो आप मांगोगे तो अब मैं वो भी दे दूंगा. लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं, मुझे सिर्फ 3 स्टेप्स चाहिए, 3 पग चाहिए, हिंदी में जो कहते हैं यहाँ पे. तो बलि महाराज जो थे ये सुनकर वो शॉक हो गए कि ऐसा नहीं, मैं आप सिर्फ इतना सा मांग रहे, मैं तो आपको पूरा ग्रह देने के लिए तैयार हूँ. लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग चाहिए, 3 स्टेप्स मुझे चाहिए. तो बलि महाराज जो है उनके गुरु ने मना कर रहे थे. उनके गुरु के अगेंस्ट में जाके उन्होंने क्या किया, पानी हाथ में लेके इस चीज का उन्होंने प्रण लिया कि यस, आप जो कहेंगे मैं वो आपको दूंगा. तो बलि महाराज के जैसे ही उन्होंने ये प्रण लिया कि आप जैसे कहेंगे मैं वहां पैसे दूंगा, तो उसी क्षण फिर भगवान ने, वामन देव ने ये किया कि उन्होंने अपना पहला पग उन्होंने जो रखा, उसमें पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया. दूसरे पग में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, जहां से गंगा मैया जो आती है वहां से. और तीसरा स्टेप उनका बाकी रह गया, तीसरा पग. तो वो बली महाराज से कहने लगे कि आपने तो प्रण लिया था कि आप मुझे 3 पग भूमि देंगे, 3 पग की जगह देंगे, मेरे 2 पग में तो सब कुछ नाप लिया मैंने, तीसरा कहाँ रखूं मैं? तो बली महाराज ने कहा कि तीसरा पग जो है आप वो आप मेरे ऊपर रख दीजिए. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बली महाराज ने कितने सुंदर तरीके से भगवान को जो मतलब जवाब दिया कि यस, आप मेरे ऊपर रख लीजिए. अब मतलब बली महाराज ने सरेंडर कर दिया कहीं ना कहीं भगवान को. तो यहाँ पे हम एक जो दूसरा हम जो सीख है यहाँ पे लेसन जो वो ये भी देख सकते हैं, जो ह्यूमिलिटी है वो यहाँ पे मतलब छुपाती है हमारे जो अनलिमिटेड जो छुपे हुए सारे है वो छुपाती है यहाँ पे. प्रभु जी, व्हाट यू हैव सेड अबाउट दैट ह्यूमिलिटी? आई जस्ट फॉरगॉट दैट पॉइंट. हाउ ह्यूमिलिटी Humility कंसील्स that conceals unlimited power. अनलिमिटेड पावर. ओके. Bahut Shakti. आ बहुत शक्ति. Yes, ओके. humility. तो जो Yeah. ह्यूमिलिटी जो है वो छुपाती है, जो मतलब बहुत जो शक्ति होती है उसे छुपाती है. तो इस सारी चीजों की जो चर्चा है वो श्रीमद् भागवतम के 8.18.23 में दर्शाई गई है, बताई गई है. यस प्रभु जी. Okay, I have number 6. I have 6, 7, 8, 9. I have 5 more. I'm wondering if I should stop here and go to the others later, or I keep going and kind of reduced a little bit the whole presentation. What should I do? From my side, I think we should stop here. We can postpone this the remaining part onto the next Okay, Sunday. What the others are telling, let's see. okay, आप सबका क्या कहना है? okay. So I'm gonna finish because I'm gonna mention a bit of Lord Krishna. We still have like a few minutes. Lord Krishna, okay? Because he's the original personality of God. He is not merely an avatar, but Swayam Bhagavan, the source of all incarnations. The idea is this, like if you have a candle, this candle can light many other candles.
but still you have the original candle. You see? So the Bhagavatam declares, Ete kamsa kala punsa krishnato bhagavam swayam. All the previously mentioned incarnations are either plenary portions or portions of plenary portions, but Krishna is the original Supreme Personality of God. That's the Bhagavatam, first canto, third chapter, verse 28. Okay? And I finish with this. Okay? The Lord has unlimited incarnations. We talk about 10. Has unlimited incarnations. Okay? The Bhagavatam emphasized the 10 are only a small sample. One of the most beautiful verses states that Avatarahi asankhya hare sattva nider vijaha yatavi dasinaha kulyaha sarasaha siyuhu sansaraha. The incarnations of the Lord are innumerable, like countless streams flowing from an inexhaustible lake. Srimad Bhagavatam 1, first canto, third verse, 26. The Lord expands into millions upon millions of forms. Many are described in scriptures, countless others are unknown to us. Every incarnation has one purpose: to attract the living entities back home, back to Godhead. So I leave this and I go from Parashuram next time and we finish may take another, let's see how next Sunday it is. So right now I can stop. Don't forget to send me feedback, because when you send me feedback, I can see how you're doing, how you're listening to this, how you're observing and analyze, everything we're discussing here. And I'll take questions. I'm sure we have questions regarding Yeah. Okay. Shall I complete this part? Shall you what? Shall I translate this part? Then we'll Yes. take the question. Yes, you can do that. Yes. Okay. Yes. Thank you. सो अभी हम यहाँ पे बाकी का जो हमारी चर्चा, बाकी के जितने भी अवतार है वो हम अगले रविवार के स्तर में अगले सेशन में हम रखेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ भगवान कृष्ण के बारे में जानेंगे और यहाँ पे इस चीज को हम फिनिश कर देंगे। तो भगवान कृष्ण जो है वो हम देख रहे हैं, भगवान का जो है वो ओरिजिनल जो है अवतार है। भगवान स्वयं ही, उसमें कोई मतलब भगवान कृष्ण है वो किसी का अवतार नहीं, वो भगवान स्वयं ही भगवान है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट पॉइंट 1.3.28 में बताया है कि बाकी सब भगवान के अवतार है। भगवान तो कृष्ण तो भगवान स्वयं करके एक जो श्लोक है ऐसे। और प्रभु जी ने यहाँ पे एक जो कैंडल का एक जो उदाहरण लिया है कि जो मोमबत्ती जो होती है वो कैसे एक दूसरे को वो मतलब रूप देती है कि हाँ अलग अलग अलग, लेकिन जो एक मोमबत्ती जो होती है उसका एक अलग रूप होता है जो फर्स्ट होती है, वैसे ही भगवान कृष्ण है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम में बताया है कि भगवान के जो अवतार है वो कोई लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है, अनगिनत है। और बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने यहाँ पे एक श्लोक का जो उच्चारण किया था, उसमें ये बताया था कि भगवान के जो अवतार है, इनकारनेशन जो भगवान लेते हैं वो इनन्यूमरेबल है, मतलब उनकी गिनती ही नहीं है। वो श्रीमद् भागवतम के 1.3.26 में बताया है कि भगवान जो है मिलियन की जो गिनती होती है ना, उससे भी ज्यादा भगवान के अवतार लेते हैं। और भगवान जो अवतार लेते हैं उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण होता है कि हर जीव जो है, हर जीव को फिर से अपने धाम में लेके जाए। यस प्रभु जी। So, and because of the questions they came right in the beginning, I did a little research in there. The mountain is called Mount Mandara. This is the mountain. Okay. The churning of the ocean of milk is Samudra Mantana. This Samudra is ocean. It's not a mountain. The mountain is called Mandara Mountain. Okay. Mandara Mountain or Mount Mandara.
That is what the chant was as a issuing there for Sovik, right? Sovik. Okay. And just for the information, I'm just gonna go read everything that came from the mountain, churning. You see, first, our greatest lady, Goddess Lakshmi, she came from the churning of the ocean. Goddess Lakshmi came from the ocean. The moon came from the ocean. Celestial horse, Ucha Shrava. The elephant, Airavata, I think is the mount of Lord Indra. The wish-fulfilling tree, Parijata. The celestial cow, Kamadhenu. The dead poison, Hala Hala, later consumed by Lord Shiva. See, the poison came from the churning. And finally, because they took the poison away, the Amrita came, not the Bhagavatamrta, only the Amrita. Okay, that is the nectar of immortality. Okay, so now we open up for some questions. Okay, Prabhuji, I have the one question from regarding this continue talk. What Yeah. was what we get after that churning, the Lakshmi? Oh, Then okay. I have a make a Goddess Lakshmi came. yeah, Then the moon, celestial moon. horse, Uchais Rava, the Okay. elephant Airavata, Hmm. the wish fulfilling tree Parijata, Yeah. celestial call Kamadenu, Yeah. the deadly poison Halla Halla, Wish. the poison. Yeah. Yes, Lord Shiva Yeah. took that one. And the Amrita, the nectar of Okay. Got it. immortality. Okay. So these seven things appear from the churning. Yes, yes, Okay. of mentioned in the Bhagavatam. It could be more, but I think Mm. those are not mentioned. This is a big turning. Lakshmi came in, the moon, it's amazing. Okay, so let's have some questions. किसी का कोई प्रश्न है तो अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो या फिर अपना क्वेश्चन आप फटाफट से चैट बॉक्स में लिख सकते हो तो हम I यहाँ पे want to इंतजार hear कर रहे some हैं feedback. Even a short feedback is good. So please, I like to hear from all of you, or my little, no, my little babies. Any ओके questions? सेशन हमारा जो खत्म होगा उसके बाद प्लीज सभी आप अपना फीडबैक प्रभु जी को जरूर दीजिएगा कि आपने इससे क्या सीखा छोटा सा भी होगा चलेगा हम थोड़ा सा स्क्रॉलिंग वगैरह में यहाँ वहाँ टाइम बिताते इससे बेटर है कि हम थोड़ा सा टाइप करके सिर्फ एक संडे को ही तो देना है ज्यादा टाइप नहीं करना So Vic, do you got your question? Samudra, ocean, and Mandara mountain. You got that? Okay. He's nodding his face. So you want to know what is the position of Srimad Bhagavatam about Matsya avatar? What do you want to know? Nothing. You You can good, huh? unmute yourself. Okay. Ah, he cannot unmute. Okay. Anybody Okay. has a question? किसी का कोई प्रश्न आज के सेशन को लेके I love Prashna. Okay. Who is Motorola Edge? You know that? Vision. No, I don't know who is he. Kaushik. Okay. Okay. The one Okay. Mataji, I forgot her name. Mataji, आप She अपने आप needs को to change unmute the कर name. सकते हैं? Momita Devnath, Mataji. Mataji, I am Momita क्या नाम था? Devnath. What name? Mobita. Movita. Mobita. Yeah. Okay, Mobita. I want to call. I was calling you Mrs. Motorola. Yeah. Yeah, we have so much fun. Okay, then. So this is, if you like this little podcast, thank you so much. And we're gonna get next Wednesday. You have a question? 1 minute. I'll get to you. I Next, have. Okay, yes, but wait. yes, yes. Next Wednesday,
we have the reading of the Transcendental Diary. It's so much nectar coming out now. Please don't miss, okay? I'll send it to everybody the link. Yes, Mata, tell me. Yes, in the end of our session, you have mentioned here like each and every incarnation has a purpose to take the soul, the jiva, back to Godhead. But it Yes. is only for that particular soul, like for Nrsimhadev is for came for the Prahlad Maharaj. It is only for that Prahlad Maharaj or other human, other jivas for others in that particular time. Okay. Lord Nrsingadev here, he act with Prahlad Maharaj for the benefit of all of us. Just like Lord Krishna came, and he instructed Arjuna in the battlefield, but it was for the benefit of everybody in the battlefield, plus us. You see, it's still now we're learning from that, situation. The Bhagavad Gita was spoken. We get knowledge from that. So Nrsingadev, yes, he had a pastime with Prahlad Maharaj, but the pastime for the benefit of all of us to show he's protecting his devotees. You see, and actually acting as a protector of the devotee, and even to a point of appearing from the pillar. Because I'm telling you, this pillar business is quite interesting because you go to the motions of seeing the harassment, the child abuse of Prahlad Maharaj by his father, and he's poisoned him. He's put it in the pit with the snakes and scorpions. He threw him out the cliff. He tried to torture him, by the machines and everything, and your anger, it boils up, you get more and more, how is this happening? So the climax of this whole thing is when the Lord appears, destroy that pillar, come out and get this guy, get Hiranyakashipu out of the way because he's harassing Prahlad Maharaj so much in such a bad way. You see, it's amazing. It's a catharsis. You see, it builds up, and immediately you have this wonderful, protection to his devotees. And Krishna also saying, my devotee never perishes. You see, he's there, protected. This is so essential in our Vaishnava Sampradaya, the protection of the Lord towards his devotees. Even Lord Chaitanya, he was so, he came here, he's the Mahavadanaya avatar. But when he heard that he broke, the two brothers, broke the pot, I think it was a wine pot, of all things, in the head, in the head of Haridas Thakur, right? It was Haridas Thakur or Nityananda. Who was that? Lord Nityananda. Nanda. Yeah. Or Nityananda. He was incensed. You see how he rushed in there. He was ready to cut out this Jagai Madai. He was ready. And Lord Chaitanya, what you say in the movies, he got out of character. He's supposed to be Lord Chaitanya, Haribol, chant the holy name, please chant, But there, when he saw that offense, he came out of character. He was Lord Vishnu himself with the disc, ready to chop off some heads, you see. And he didn't care, just like Lord Krishna, he took the disc, ready to chastise Bhishmadev because he was, hurting Arjuna so much. You see, Krishna also came out of character. He just forget about what I promised. I'm gonna, I want to do something here. So the Lord, he will go out of character to protect the devotees. You see, he will go to immense lengths to protect the sincere devotee that just want to glorify him. Okay? Yeah. Thank you so much, Prabhuji. The wonderful, the deep answer I got from you. We should go. Next time we go to Parasuram, we go to the end of the line. And because this is amazing,
Now, if you just think for a minute, he came as a horse, he came as a kurma, he came as a varaha. Who knows? The Lord may appear as an ant, you know, or as a bird, or whatever. It's beautiful. Then every time he appears, it's a beautiful appearance. The ant probably has crown and beautiful jewelry and everything. Why not, right? He That appears can in do anything. every he appears I in never thought every about kingdom. that. I never thought. This is the body going, thinking. You see, he appears in every, kingdom, animal kingdom, human kingdom, demigod kingdom. He appears, there's so many incarnations. One can be an ant incarnation. It'll be a wonderful thing, to see. Okay, so I thank you all very much. I love this podcast. I feel very good about it. I remember Yes, one thing. Can I share just a little bit yes, of? please I share, heard this please. from His Grace Indradyum Swami Maharaj when he came to our place here. I heard from him like when we hear about the Lord Hari, Lord Krishna came in the form of a lion to protect his devotee Prahlad Maharaj. In another time, Lord came in the form of cat and a lion, and in one slap, in just one single slap, he diminished the demons. Yeah, the cats can do that. And the big cat, yeah, definitely. Huh. Okay. Thank you Yes, so okay. much. And